Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. Our subject is science. Unit number 4, lecture number 20, and our today's topic is exercises. Please open page number 39 of your science book. You can see over here the first question is choose the correct answer. आपने दुरुस्त जवाब को आपने चूज करना है, इंतखाब करना है. Here our statement is given. The first statement is which of these is not one of the five kingdom. अब आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 5 किंगडम में नहीं आता. So the option A is animals. Animal is included in 5 kingdom. Option B is plants. Plant is also. Option C, prokaryotes. It is also the part of 5 kingdom. Option D, insects. So, insect is the correct answer. MCQ number 2 is, what do vertebrates have? Vertebrates में क्या है? That invertebrates do not, जो कि invertebrates में नहीं है. Option A, body. Option B, eyes. Option C, backbone, and option D, legs. So the correct option is backbone because vertebrates have backbone while the invertebrates do not have. MCQ number 3 is, which of these is an insect? Insect इनमें से बताना है कि कौन सा insect है. The first one is bluebird. Option B is bat. Option C is spider. And option D is cockroach. So the correct answer is cockroach. The fourth statement is, which of these do insects have? Insects में आपने बताना है कि क्या insects में कौन सी qualities हैं. Option A is 6 legs and a hard covering. Yes. Option B, 2 feelers or antenna. Yes. Option C, 3 parts to their bodies. Yes. And option D, all of the above. So the correct option is all of the above. यानी कि ऊपर दिए गए तमाम ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं इंसेक्ट्स के लिए, because insects have 6 legs and a hard covering, 2 feelers or antenna, and 3 parts to their bodies. So the correct option is option D, all of the above. Statement 5 is, what do we call insects which destroy plants? वो कौन से इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. ऑप्शन ए नास्टी, ऑप्शन बी पैरासाइट्स, ऑप्शन सी सोशल, एंड ऑप्शन डी पेस्ट. So the correct option is option D, pest. Pests are the insects which destroy the plants. You can see over here question number 2 of your page number 39. Put these in order. आपने इनको एक तरतीब से बताना है. You may want to discuss the answer. आप इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस भी कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ बिगेस्ट. आपने बताना है कि बिगेस्ट सबसे बड़ा कौन है, विच इज़ स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा कौन है. स्टूडेंट्स यू कैन सी ओवर हेयर देयर आर A to E ऑप्शंस आर देयर. यू कैन पुट दीज ऑप्शंस इन ऑर्डर. फर्स्ट यू टेल who are bigger and then you can say who are smaller. So I arrange these in order. You can see here butterfly, grasshopper, and cockroach. These are biggest, while fly, ant, these are smallest. Option 2 is विच इज़ लॉन्गेस्ट. आपने बताना है कि सबसे लंबा इनमें कौन है, एंड विच इज़ शॉर्टेस्ट और छोटे कौन है.
I again arrange these. Earthworm and bootless worm are the longest insects, while hookworm and nematode are the shortest. The third one is, which is quietest, which is noisiest. आपने बताना है कि इनमें से कौन सा खामोश है और कौन शोर मचाते हैं, कि किन की साउंड होती है और किन की साउंड नहीं होती. You can see over here, mosquito, fly, beetle are quietest, while the bee and cricket are the noisiest. स्टूडेंट्स, आपने इनको बुक पर इसी तरह अरेंज फॉर्म में लिखना है. द फोर्थ वन इज, विच इज़ सॉफ्टेस्ट. आपने बताना है कि कौन सा नर्म है, एंड विच इज़ हार्डेस्ट और कौन सा सख्त है. यू कैन सी ओवर हियर, आई अरेंज दिस अगेन. बटरफ्लाई एंड beetle are the softest. I again repeat this. Butterfly, beetle, ant are the softest, while ladybird and dragonfly are the hardest. Clear student? इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने बताना है ऑर्डर में कि कौन से फर्स्ट में आपने बताना है कौन से बिग हैं कौन से स्मॉल हैं. मैंने आपके लिए अरेंज किया है. सेकेंड वन में आपने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बताने हैं. थर्ड वन में आपने क्वाइटेस्ट एंड नॉइजेस्ट बताने हैं. एंड फोर्थ वन में आपने सॉफ्टेस्ट एंड हार्डेस्ट बताने हैं. क्लियर? नाउ यू कैन सी एट पेज नंबर 40, fill in the blanks using words from the boxes. From the box. The box is over here. You can see easily wings, parasites, colony, diseases and bodies. So with the help of these words you can fill these blanks. Number 1 is, most insects have wings attached to them that help them to fly. ज़्यादातर हशरात में विंग्स होते हैं, पर होते हैं, अटैच होते हैं, जो कि उनके उड़ने में हेल्पफुल होते हैं. सेकेंड वन इज, अ कॉलोनी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग टुगेदर. कॉलोनी जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स का जो कि इकट्ठे रहते हैं. थर्ड वन इज, some worms live in other creatures. They are parasites. कुछ worms ऐसे हैं जो कि other creatures मखलूक़ात हैं जो कि parasites हैं, जो कि some worms live in other creatures. कुछ worms ऐसे हैं जो कि दूसरी मखलूक़ात में रहते हैं. They are parasites. वो क्या हैं? Parasites हैं. Flies and mosquitoes can cause diseases. फ्लाइज मक्खियाँ, मॉस्किटोज मच्छर किसकी वजह बनते हैं? बीमारियों की. वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज. वर्म्स की जो बॉडीज़ हैं एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होती हैं. वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज़. वर्म्स जो हैं वो ट्यूब लाइक बॉडीज़ के बने होते हैं. स्टूडेंट्स, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. यू ऑल्सो लर्न इट केयरफुली. Next one is, answer these questions. Students, if you remember that I give you the answers in chunks while we read the paragraph. So today I again discuss all these questions and you just learn it. You can see over here the question number 1 is, what do you understand by the classification and why do you think it is important? क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं और ये क्यों अहम है? क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग और सॉर्टिंग थिंग्स. क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप करना, ये चीज़ों को सॉर्ट करना. साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स टू मेक देयर स्टडी ईजियर एंड फास्टर. साइंसदानों ने क्लासीफाई चीज़ों को इसलिए किया, ग्रुप्स इसलिए बनाए ताकि स्टडी करना आसान और तेज़ हो जाए. Question number 2 is, name 2 mammals that live in the water.
आपने 2 मैमल्स के नाम बताने हैं जो कि वाटर में रहते हैं। द आंसर इज डॉल्फिन, व्हेल, manatee and dugong. These are the mammals who live in the water. Name 5 invertebrates that could be living in a garden. आपने 5 invertebrates के नाम बताने हैं जो कि गार्डन में होते हैं। The answer of this question is earthworm, spider, beetle, butterfly, ladybird and grasshopper. These are the 5 invertebrates that could be living in your garden. You can see over here the question number 4 is name 3 invertebrates that live in the sea. आपने 3 ऐसे invertebrates के नाम बताने हैं जो कि समंदर में रहते हैं। The answer of this question is crab, worm, sea slug, sea spider, coral, starfish, oyster and octopus, etc. These all are the invertebrates that live in the sea. Question number 5 is name the invertebrates that have more than 3 pairs of legs. आपने ऐसे invertebrates के नाम बताने हैं जिनकी legs के 3 pairs होते हैं और more होते हैं। The answer of this question is spider, crabs, legs, centipedes and scorpions, etc. They all are the invertebrates that have more than 3 pairs of legs. Question number 6 is what kind of insects live in colony or group? किस किस्म के हशरात जो हैं वो ग्रुप और कॉलोनी में रहते हैं। Why is living this like this useful to them? उनका इस तरह रहना उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। The answer is bees, ants and termites live in colonies. Bees, ants और termites कैसे रहते हैं? colonies में रहते हैं। They share the work. वो काम को शेयर करते हैं by having specific jobs to do, including depending their queens which lay eggs. वो अपने काम को आपस में मिलजुल कर करते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं? अपनी क्वींस पर जो कि एग्स देती हैं। I repeat this answer again. Bees, ants and termites live in colonies. They share the work by having specific jobs to do, including depending their queens which lay eggs. Question number 7 is which insect is a pest? कौन सा हशरात है जो कि पेस्ट है, कीड़ा है। Are there any in your house? क्या ये आपके घर में हैं? You can see flies, mosquito, cockroaches, fleas, lice, some kinds of beetles, etc. They are your pest, and maybe they are in house of someone. You can see mosquito is fly over here and there, and we observe mosquito and flies commonly. Question number 7 is what are antenna? What are they used for? Antenna क्या है और ये क्यों यूज होते हैं? Antenna or feelers are sensitive parts, long parts that stick out from the head of an insect. They are used for smelling and feelings. I repeat this question again. You can again listen this question. What are antenna? Antenna क्या है? What are they used for? ये किस लिए यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं? Means function of antenna is what? The answer of this question is antenna or feelers are sensitive long parts. Antenna or feelers like antenna means महसूस करने वाले, feelers mean महसूस करने वाले, एंड आर सेंसिटिव लॉन्ग पार्ट, ये एक बहुत हसास लंबा सा हिस्सा है जो कि स्टक होता है किसी भी इंसेक्ट्स के हेड के साथ।
that stick out from the head of an insect। ये इंसेक्ट के हेड के साथ कनेक्टेड होता है और ये बहुत सेंसिटिव और लॉन्ग पार्ट होता है। दे आर यूज फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। इसका फंक्शन क्या है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है? स्मेल के लिए और फील करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई? क्या तमाम इंसेक्ट्स उड़ते हैं? कैन यू नेम सम दैट डू नॉट? क्या आप उनके नाम बता सकते हो जो ऐसा नहीं करते? येस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स। बहुत से हशरात ऐसे हैं जिनमें पर होते हैं। मैनी काइंड ऑफ एंट्स डू नॉट हैव विंग्स। बहुत किस्म की चूंटियाँ हैं जिनमें विंग्स नहीं होते। Question number 10 is name some small creatures which are not insects। आपने छोटी ऐसे मखलूक़ात के बारे के नाम बताने हैं जो कि हशरात नहीं हैं। Say why they are not insects। और आपने ये भी बताना है कि वो इंसेक्ट्स क्यों नहीं हैं। The answer of this question is birds and bats can fly but they are not insects। बर्ड्स और बैट्स उड़ सकते हैं लेकिन वो हशरात नहीं हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, क्योंकि हशरात में हड्डियाँ नहीं होती। दे आर स्पॉटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ लार्ज हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिंग। उन्हें उनकी स्पोर्ट के लिए, उनके सहारे के लिए और उनकी प्रोटेक्शन मीन हिफाजत के लिए एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम काइटिंग बोलते हैं। Again listen this question. Birds and bats can fly but they are not insects. Insects do not have bones. They are spotted and protected by a hard covering called chitin. Students, learn all question answers in exercise. It's your today's diary. I hope so you do really well and learn all the question answers of your unit number 4. Thank you so much. Allah Hafiz.